Namaskar. It's a great pleasure and an honor to be here to the Udaipur Tales and to be in the presence of some great performers. So I'll try not to think about them and just focus on my. तो before I start, I just want to say कि ललदेद जो है, वैसे मैं शरीर पे माइक लगवा सकती थी, लेकिन मेरा नाटक जो एक my play, which is what would people prefer, a lot of more of Hindi or more of English? Okay. तो मेरा नाटक जो है my play, it's actually a 1 hour thing, 1 घंटे का. तो उसका वो मैं यहाँ नहीं लाई हूँ. I am going to present ललदेद to you. एंड एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी कि ललदेद ऐसी शख्सियत हैं जो अगर आपसे मिलना चाहती हैं तो वो खुद आती हैं. मैं सिर्फ पीछे पीछे चली आती हूँ. सो ललदेद wants to be here. She wanted to meet you in Udaipur. I just follow her. And I'm saying that not as some kind of, false humility or the usual some stuff like that, but I have experienced the energy of a woman who was in Kashmir 700 years ago. 700 साल पहले वो कश्मीर में चलती फिरती थी. 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने सारे वस्त्र उतार दिए और वो महायोगिनी है. उसका ये सबूत है क्योंकि आप कश्मीर के मौसम में नग्न तो चल ही नहीं सकते हैं. आप कोई आम इंसान तो आधे घंटे में मर जाएगा. So an ordinary human being who would walk without clothes in Kashmir would not survive more than half an hour, certainly not in the winter. So this is proof that Lalded was also a great yogini, a great tantric yogini. Now tantra is not to do with the hocus pocus that we've made it into, but tantra is actually the ability to control your breath to such a great extent that you master the one thing that keeps you alive. The breath is something he gives and he takes. But the yogin, the great tantrics and the great yogis, they master it. And then they almost become one like God, because then they decide what to do with that breath. And they can even control their body temperature with it, which is why someone like Lalded could roam the valley of Kashmir stark naked. अच्छा, हम में से कितने लोग कश्मीरी बोलते हैं यहाँ? अच्छा, वाह, ठीक है. So how many of us know कि कश्मीरी भाषा जो है वो किन दो महानदी भाषाओं का एक मिश्रण है? You will not say it, huh? Well, I guess that happens. कितने लोग बता सकते हैं? How many people know what two great rivers of languages go into? Acha. No, two rivers of languages. I'm not talking about the rivers in Kashmir. I'm talking about the languages. Kashmiri जो भाषा है, it's made up of 2 languages. Perfect. Oh, this is great. Because most people say Urdu, Hindi, Dogri. It is Sanskrit, one great, great river of, and Persian, Farsi. Both of these carry a DNA which goes into making the language of Kashmiri, what we call Kashmiri. And the word Kashmir itself is, etymologically from Sanskrit. It is a breakup of ka, ashwa, ira, which means water that was surrounded by mountains flowed out and the valley emerged. This is actually a myth with a lot of valley civilizations. Nepal has something similar. But Ka Ashwa Ira makes Kashmir, and that's a Sanskrit word. The civilization goes back to more than 5,000 years. The languages that make Kashmiri are Persian and Sanskrit, with 700 Jewish words, which is what a Kashmiri scholar told me. That's there in my film. I have a film called She of the Four Names, which is a kind of a docu-feature. It's on YouTube. I shot it in 2010-11, so it's there. So let's start by just saying what Lalded said. So
My play is actually it has 10 vaks. Vak is what Lalde's poetry is referred to as. Vak comes from vachik, the vak, the spoken, the uttered. Vak. So the Bible says, in the beginning there was the word. We say Om was Shiva's sound and the universe got created from there. So the idea of the spoken or the uttered is extremely primal to the idea of the creation of the world. So imagine how powerful the word is, much more powerful than sight, apparently. So Laldet, I say 10 of her works in Kashmiri, and I don't explain those when I'm doing the play because I realized that, very often we watch American Hollywood films and we don't understand a word of the accent sometimes, but we still watch Bruce Willis and we don't question what did he just say. We'll catch it up later. So I said, why do we become so impatient with the sounds of our languages in this country, which has the most amazing variety of languages, dialects, and all of that. But for a long time, I did not read Kashmiri at all. I read everything there was to read about Laldet. I read her vaks. मैंने सारे उनके वाक पढ़ लिए, जो कुछ उनके बारे में किसी ने भी लिखा था, सब पढ़ लिया. और पर कश्मीरी में नहीं पढ़ा. जिस दिन मैंने कश्मीरी में पढ़ा, क्योंकि एक भूत आ गया मेरे कमरे में, आई एम नॉट जोकिंग. मैं रात को सो रही थी, रिसर्च कर रही थी, 3 साल लग गए. तो एक रात को बहुत बारिश हो रही थी, पौंडीचेरी के एक थिएटर आश्रम में थी मैं, ऑरोविल में, और मैं थक गई थी. मैंने कहा ये ललदित क्यों नहीं आ रही है मेरे पास, समझ में क्यों नहीं आ रही है, माने क्यों नहीं हो रहा मुझसे ये प्ले. 3 साल लगा दिए रिसर्च में. तो उस रात को मैं अचानक उठी और 3 बज रहे थे और बहुत बारिश हो रही थी. वो अंधेरा वाला कैंपस था, उसमें लाइटें वाइटें थी नहीं, और अचानक शरीर जड़ हो गया था. You know how it is when you wake up in your sleep, sometimes you think you can see everything but your body's not able to move. And I thought I saw an apparition of a man who was standing on my bed looking at me and slightly swaying and leering, and he was wearing a Kerala mundveshti. And I'm like saying, no, I haven't been celibate for so long that I'm imagining a man standing next to me wanting to make love. This can't be it. So this is something weird. So I kind of have a feeling of chanting some Hanuman Chalisa or something to get rid of this apparition, because I could see him and I could see the room through him and I could see the doors and the windows and everything. And then I opened my eyes after some time and I was so frightened I couldn't go back to sleep. So I switched on the light. It was pouring outside. And the books of Laldet were lying on my desk. And I had read everything everybody had to say to her. I had read her in English and Hindi and everything. So I didn't know what to do, but I had to pass those 2-3 hours before daylight. So the only thing I realized I hadn't done is to read her in Kashmiri. So I started reading her in Kashmiri. Of course, the Kashmiri was in Devanagari script, so I could read. So I started by trembling and saying, Kusmari to kasmaran. No. Okay. Kusmari to kasmaran. Marikus tamaran kas. Kusmari to kasmaran. Marikus tamaran kas. And that is when the rhythm inside the vak started occurring. I said, oh my God, this is the sound. This is why 700 years later to the current day, people remember Laldet's vaks by heart. And for the Kashmiris, every Kashmiri, if they don't know Laldet, they're not a Kashmiri. You don't have to look at their passport or any ID papers or Aadhaar card or anything. You just have to say, do you know Laldet? And that entire generation of people above the age of 50, they will know Laldet, they will have, उनके वाक उनको जुबानी याद हैं, वो वाक से वार्तालाप करते हैं. So let's start by speaking Kashmiri, shall we? All right. So you will repeat after me now. Kusmarit kasmaran. Marikus tamaran kas. Yus hari hari travit. Gari gari kare. Ad sumrit. Tamaran tas. So what do you think this means? Kusmari kasmaran marikus tamaran kas. Kusmari? Who kills? Kaun marta hai? Takasmaran, who dies? Kaun marta hai?
कौन मरता है, कौन मारता है, किसने मारा तुम्हें, कैसे मरे तुमने हरि जो तुम्हारे अंदर भगवान है उसको तो कहा जा जा जा, गरी गरी करे, दुनिया से कहा आ, स्वयं को मारा, खुद मरे तुम। Who kills, who dies, who killed you, how did you die? You said go, go, go to the self. You said come, come, come to the world. You killed the self. You died. So when you were speaking, so now we all speak Kashmiri, at least one wak we do. So we're all Kashmiri technically. So you would have noticed the rhythm and the taste of the language on your tongue. When you said kusmari the kasmaran mari kustamaran kas, you'll notice that there's a kind of a rhythm which is inside the lines. And this is very much the rhythm of the Vedic meter as it's in the Samved, I'm told. So it's not the end rhyming like wine and dine and mine and thine, like we are used to the idea of certain amount of poetry, or it's a blank verse. But with lull there's always a rhythm that's inside. And traditionally, in our tradition, the Eastern tradition, we did not write anything. It was always the oral tradition. It was passed on. You listened to the teacher and they imparted the word, you took it in, at whatever level was your understanding, you sort of processed the word at that level. So therefore, lal vaks were not written, they were actually finally written formally बाद में. जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा बहुत सारा लोग लल्लल करते रहते हैं, लल्ला करते हैं, लल्लेश्वरी करते हैं, और उनकी कविताएं कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो ये कौन है और क्या है. तो कुछ 18th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में एक ग्रियर्सन करके थे ब्रिटिशर जो वहाँ पे थे, तो उन्होंने कुछ कश्मीरियों को बिठा के लिखवाए वाक और ट्रांसलेट किए. और उसके बाद A.K. रामानुजन ने करंटली बहुत सुंदर कुछ ट्रांसलेशंस की हैं. जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो ग्रियर्सन के हैं, कुछ जो हमने अपने आप ट्रांसलेट किए थे हिंदी में, और कुछ कश्मीरी जिनको आप ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी जो रिदम है और उनका जो स्ट्रक्चर है वो इतना सुंदर है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. एंड A.K. रामानुजन तो ललवाक जब कुस मारी तो कस मारन मारी कुस तमारन कस बोला, जब मैंने उसको दोहराना शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि लल्ला का जो वाक है उसमें एक इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स बहुत ज़बरदस्त है. माने बहुत सटीक शब्दों में सब कुछ बोल देती हैं वो. और संस्कृत भाषा का ये है, संस्कृत जो भाषा है उसमें भी ये है. पर्शियन क्योंकि मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ उससे, तो मैं समझती हूँ कि उसमें भी कुछ होगा. शब्दों की एक गहराई होती है जिनको आप कंबाइन करते हैं तो बहुत सारे मतलब एक ही चीज़ से निकलते हैं. अगला वाक ललदित का है जिससे मैं शुरू करती हूँ, वो है गगन च भूतल च चदनियन पावंत रात, अरग चंदन पोष पून चुई सरोय च तला गई क्या. गगन च है तू, सॉरी, भूतल तू च चदनियन पावंत रात. रात तो जानते हैं, पावन इज पवन, दनियन इज दिन, डे, दिन रात पवन. अरग चंदन, चंदन चंदन. पोष पून चुई, पोष इज फूल इन कश्मीरी, पून चुई जो पानी छिड़कते हैं. सुरोय तला गई क्या, तो वो भगवान से कह रही कि गगन हो, भूतल हो, ज़मीन आसमान हवा दिन रात, जो चंदन हम लगाते हैं वो तुम हो, पानी जो छिड़कते हैं वो भी तुम हो, तो मैं किससे तुम्हारी पूजा करूं. And the third vak which I speak is in the beginning, which is all in Kashmiri, and I don't explain it, but I'm explaining it here, is Lal butsayas bage baras vuchum shiva shakti milit wah. Titsiye lai karmas amrit saras zinde marast me keri kya. So in English, I'll say it. I, Lalla, entered the garden within of myself. I entered the garden within and found Shiva and Shakti embraced in perfect union. मैं लल्ला अपने भीतर जब गई, पूरी तरह से भीतर,
तो मुझे शिवा शक्ति का एक मिलन एक्सपीरियंस हुआ, और जब ये हुआ द नेक्टर एक्सप्लोडेड एंड आई डाइड। अमृत फूटा और मैं मर गई, और ऐसा मरी कि मैं इतना जिंदा कभी थी ही नहीं। So the variety of Lalla works tells you why she continues, and I can say this, मैं दावे से कह सकती हूँ, यहाँ बहुत पोइट्स भी बैठे हैं जिन्होंने बहुत पोइट्री का वो किया भी है, बट ललित इकलौती पोइट हैं दुनिया में आज तक 700 साल में जो जहाँ पे पैदा हुई थी, जिन लोगों में वो पली, आई मीन कश्मीरियों में इतना गहरा रिश्ता किसी पोएट का अपनी कम्युनिटी के साथ नहीं है जो कश्मीरियों और ललित का है। 700 साल तक आज भी जीवित है। अगर आप जम्मू के कैंप्स में जाएं तो आज भी ललवा का ललित की पोइट्री पढ़ते हैं वो शाम को ऐसे ही। एंड इट्स एन इनक्रेडिबल रिलेशनशिप विद दिस पोएट ऑफ देयर्स। तो उनके कई नाम हैं, लल्ला बोलते हैं, लल्लेश्वरी, ललदैद, द ओल्ड लेडी विद अ हैंगिंग स्टमक बिकॉज शी वाज सपोज्ड टू वॉक नेकेड, and they also call her Lalmerj, the mother. And all Hindus and Muslims of Kashmir, she is the shared icon for them. जितने हिंदू और मुस्लिम कश्मीरी हैं वो ये नहीं कहते हैं, मुस्लिम कश्मीरी मुस्लिम ये नहीं बोलेंगे कि ललदैद ने इस्लाम अपना लिया था, नहीं, वो बोलेंगे वो तो शैव तांत्रिक हैं। एंड आई फील पोइट्री इन द स्पोकन वर्ड एक्चुअली कैरीज, जिसे कहते हैं ना DNA जो होता है हमारा हम सब का, जिससे हमको पता चलता है कि हमारे दादा परदादा और या हमारा अस्तित्व क्या है। तो जो ग्रेट पोएट होता है वो एक अस्तित्व अपने पोइट्री में बैठा लेता है उस समय का, लोगों का, और एक उस सिविलाइजेशन की आत्मा का। तो जब ललित के ऊपर मैंने बाद में और रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि कश्मीरियों में तो मूर्ति पूजा है ही नहीं। शिवलिंग जो उन्होंने जो आया, जो पूरे भारत में शिवलिंग है, कश्मीर में बहुत सालों तक नहीं था, क्योंकि वो मानते हैं कि हम लोग लाइट, देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट विच इज़ ग्रेट एनर्जी, जिसका हम सब कतरा हैं। यू नो, शिव छोए थली थली रोजान मोजान ह्युंत मुसलमान त्रुकोई छुप पान प्रजनाव स्वच्छ साहिब ज़नी जान कि शिव। सो वन इन द फिल्म वन वेरी इंटरेस्टिंग मुस्लिम ननवाई सेज, वो कहते हैं शिव छोए थली थली रोजान, मतलब अल्लाह सब देख रहा है, उसके दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं है, तो तुम क्यों इधर उधर हिंदू मुसलमान को टटोलते हो? बिकॉज इवन इन ललित's टाइम, ऑल्दो द मुस्लिम किंग यूज्ड टू सेलिब्रेट द शिवरात्रि एंड द सेलिब्रेशन, द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ द कश्मीरीज इज शिवरात्रि, वो सेलिब्रेट महल से शुरू होता था, मुस्लिम किंग के महल से। जब कश्मीर की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, वो वैदिक सिविलाइजेशन है हज़ारों साल तक, फिर उसमें 400 साल बुद्धिज़्म आया, फिर 700 साल पहले इस्लाम आया, फिर डोगरा भी था बीच में, सिख भी थे, सब कुछ। लेकिन जो 4 बजे या 5 बजे की जो आज़ान होती है श्रीनगर में, वो मुझे बताया गया कि वो आज़ान सामवेद के नोट्स पे होती है आज भी। और तब मुझे समझ में आया कि कश्मीरियत का मतलब क्या है, यू नो। सो एनीवे, वील टॉक अबाउट ललित मोर एंड मोर। तो जब वो बहुत छोटी थी तो ओपनिंग जो मेरा प्ले का है, जिस तरह मैं उसे करती हूँ, वो मुझे एक मॉडर्न पोएट एक अंजुम हसन है, उनकी पोइट्री से मुझे कुछ लगा कि एक ओपनिंग ऐसा होना चाहिए प्ले का। सो अंजुम का पोएम है, इंग्लिश में एक पोएम है, शी वॉज अवेकन्ड एट डॉन 1000 years ago and never went back to sleep. Her eyes took on the color of bleak early mornings and her hair smelt of wood smoke. So I said, oh my God, this is something that is someone जिसे हज़ारों साल पहले जो जागरूक हुई, उसके बाद वो कभी उसने आंखें बंद नहीं की, you know. So in the play, I start with an upturned head, with just the head showing, because there's also an idea that a lot of Sufis in their meditation used to hang upside down, which is not to say that Lalit is a Sufi. In fact, Lalit एक अकेली कवित्री है जिसको आप किसी भी दायरे में बांध नहीं सकते हैं। आप कहो वो सूफी नहीं है, आप कहो वो भक्ति पोएट नहीं है, आप कहो वो फेमिनिस्ट हैं, उससे बहुत आगे निकल चुकी है,
आप कहो वो सोशल रिफॉर्मर्स थी, तो वो सबसे पहले तो महान पोएट थी, और हर महान कलाकार और हर महान पोएट वैसे भी बहुत तब्दीली लाता है समाज में, उसका कचरा साफ कर ही देता है। तो उसके लिए आपको अलग से, सो आई यूजुअली स्टार्ट लाइक दिस, like this. So I lie down like this, the light comes on my head, and then I just open my eyes and then I recite Kusmarit kasmaran mari kustamaran kas yus hari har trevet kari kari kare adsumrit tamaran tas. And I do the 3 walks like that, then I start telling her story. तो बहुत बचपन की उम्र में उनको समझ आ गया था, उन्होंने सब आध्यात्म, भगवत गीता, सब रामायण और जितने आध्यात्म योगिक टेक्स्ट, तांत्रिक टेक्स्ट, सब उन्होंने बचपन में ही उन्होंने उस पर काबू पा लिया था. शी हैड ऑलरेडी मास्टर्ड ऑल द टेक्स्ट एट द एज ऑफ 6 or 7. इंटरेस्टिंगली, फॉर ऑल ऑफ अस द नॉर्थ इंडियंस हु वैल्यू द जनेहू a lot, जनेहू, दोज हु नो, जो जनेहू जानते हैं, जो सिर्फ लड़कों को पहनाया जाता है. कश्मीर में 6 साल की बच्चियों को जनेहू दिया जाता था क्योंकि उनकी शिक्षा का समय तब शुरू होता था. तो लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है वहाँ पे, जहाँ तक एजुकेशन है. और कश्मीर में कास्ट सिस्टम भी नहीं है. आप भट्ट हैं, पंडित हैं, बस हो गया. उसमें ना शूद्र है, ना ब्राह्मण है, ना कुछ, सब लोग ब्राह्मण हैं. और कश्मीरी के टीचर्स होते थे वो, जितने पंडित लोग थे. सो एनीवे, सो लल्ला ने बहुत शुरू में कह दिया था कि मेरे पूर्व जन्म ये थे और मेरे आने वाले जन्म ये होंगे, इसमें मैं, और अब मैं लल्ला हूँ, और इसी उम्र में मुझे सब कुछ पाना है. नए जन्म का अब समय कहाँ, अब मैं लल्ला, ये मेरा 7वां जन्म है. कई नाम है मेरे, कोई मुझे ललदत कहे, कोई लल्लेश्वरी पुकारे, और लल मर्ज भी मेरा ही नाम है. किस नाम से पुकारूं मैं मुझको. Then she says, नए जन्म का अब समय कहाँ. One of her beautiful walks is, ये झील इतनी छोटी राई के एक दाने से भर जाए और इसी में समा जाएं गिरते पड़ते हिरण, सियार, गेंडे, दरियाई हाथी. नए जन्म का अब समय कहाँ. So what is this झील जो इतनी छोटी है? What is this lake so tiny a mustard will fill it? A mustard seed? And yet it can be so vast that the rhinoceros, seahorses, tigers, lions can keep falling in it. Where is the time for this business of being born and reborn? So can anybody tell me what is the idea of this lake? So tiny that a mustard will fill it, and at the same time so vast that the entire world can keep toppling in it. And दिल का दरिया तो अच्छी बात है. Huh? The soul, yes, the soul is a large thing, but thought is pretty close. Where does a thought occur? In the mind. So the mind, and that's also very Vedic symbology, the mind. You'll find in Lalwaks a lot of the thing about the lake, clear as crystal or filthy or whatever. So you know how we get obsessed? हम लोग एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे, छोटी सी चीज़ राई के दाने के बराबर, कि उसने ये कह दिया, वो हमारा पूरा दिमाग खा जाएगा, भर जाएगा दिमाग उससे. और अगर आप अपने इसी मन को विशाल कर लें तो इसमें सब कुछ समाता रहेगा, अपने आप कहीं डूब के निकल जाएगा. तो लल्ला का ये पावर है. और कैसे आम जिंदगी में कश्मीरी लोग लल वाक से वार्तालाप करते हैं ये मैं बता दूं. जैसे मैं एक्ट्रेस हूँ, अगर मेरा ये कॉलिंग है कि मैं एक्ट्रेस हूँ, पर मैंने 19 साल की उम्र में सोचा नहीं एक्टिंग में तो क्या है, टीवी, उन दिनों टीवी नहीं था जब मैं एक्ट्रेस बनी, एक्टिंग नहीं करनी चाहिए मुझे, तो बैंकर बनूंगी ना तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, और अगर फॉरेन बैंक में मैं जुड़ जाऊँ तो मैं तो अमेरिका भी जा सकती हूँ. तो अगर मैंने ये विचार कर लिया, जो मार्ग था उसे छोड़ के दूसरा मार्ग पकड़ा, क्योंकि उसमें फ़ायदे थे, लेकिन वो मेरा मार्ग था नहीं, लेकिन फ़ायदे नज़र आए, उसको पकड़ लिया. जैसे कि आप जब शादी करते हैं तो एक लड़की से आपको इश्क है, दूसरे के बाप के पास पूरा दौलत है, तो आप कहते हैं हाँ ये अच्छी है, लेकिन लाइफ में तो ये लाइफ पार्टनर है. फिर आप कुछ समय बाद कोसेंगे
कि ससुर बेकार, इसमें तमीज़ नहीं, ये वो, बनती नहीं, फलाना ढिमकाना। और मैं अगर बैंकर बन गई तो मैं कहती है बैंकिंग धंधा ही ख़राब है, लोग बकवास हैं। तो अगर आप और मैं कश्मीरी होंगे और मैं आपके पास ये गिला शिकवा लेके आऊँ कि यार बैंकिंग के लोग ही बकवास हैं, तो आप कहेंगे मीता कुस मारी तो कस मारन। That's it. This is how the Kashmiris talk with lalwak. And लल का वाक एक तो योगा से बहुत जुड़ा हुआ है कि उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या थी, सामाजिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा ज़बरदस्त है। वो कहती हैं एक वाक में कि बेवकूफ़ को ज्ञान देना हाथी की चमड़ी को खुजाने के बराबर है। तो अपना समय मत बर्बाद कीजिए, जो बहुत ही बेवकूफ़ है उसको ज्ञान मत दीजिए, अपना रास्ता नाप लीजिए। वो उन्होंने प्रेडिक्शंस भी की। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब सेब और खुरमानी एक ही मौसम में पकेंगे। एनवायरमेंटल डिजास्टर आने वाला है दुनिया में। सेब और खुरमानी एक ही मौसम में पकेंगे, माँ और बेटी एक ही जैसे कपड़े पहन के हाथ पकड़ के घर से बाहर निकलेंगी एक ही चीज की तलाश में। So, she was talking about every kind of disaster, whether it was environmental, spiritual, the idea of generations not being able to cope with things, So anyway, then Laldet knows that she has to get married. उनको पता है मेरा ब्याह होना, और उनको पता है कि ये ब्याह जहाँ होगा वहाँ पे मुझे बुरी तरह से रखा जाएगा, लेकिन मुझे इसमें जाना है। और 12 वर्ष की उनकी आयु में उनका विवाह इसलिए हुआ क्योंकि हालांकि कश्मीरी लोग 25 वर्ष के उम्र के पहले किसी का विवाह नहीं करते थे बच्चों का, बिकॉज 25 तक ब्रह्मचार्य था। आप 0 से 25 की उम्र तक आपका लर्निंग फेज होता है। लेकिन उस समय हिस्ट्री में पठान्स का अटैक होने लगा था नॉर्थ से, और वो कुंवारी लड़कियों को उठा ले जाते थे। तो इसीलिए कश्मीरियों ने 2 चीज़ें की। उन्होंने सबसे पहले तो अपनी बच्चियों को 12 साल में ब्याह दिया। वो कंज्यूमेशन वाला ब्याह नहीं होता था, वो फॉर्मेलिटी का ब्याह होता था, क्योंकि एक बार ब्याह दिया तो ऐसा माना जाता है कि ये लड़की अब कुंवारी, इसे नहीं मान सकते हैं। तो पठान उन्हें नहीं छूते थे। दूसरा, आर्किटेक्चरली उन्होंने अपने घरों के दरवाजे बहुत छोटे कर दिए, क्योंकि पठान सर नीचे करके कभी नहीं घुसेगा किसी के घर में, प्राइड है, और सर नीचे करके आप घुसे तो आप वैसे भी आपका सर कट सकता है। सो दीज वर द थिंग्स। फिर 17 साल की उम्र में उनके बारे में बड़ी कहानी मशहूर है। देयर आर मेनी ग्रेट स्टोरीज अबाउट ललदेद विच आर ऑलमोस्ट मैजिकल। उनमें से एक ये है कि वो अक्सर पानी भरने जाती थी नदी पे, और वो उनका मेडिटेशन होता था। तो एक मटके को लेके उसे भरती थी, फिर उड़ेलती थी, फिर भरती थी, फिर उड़ेलती थी, और ऐसे उनका मेडिटेशन चलता रहता था। एंड मे बी शी वॉज रिसाइटिंग हर वर्क्स, दे वर अराइविंग। तो सास को लगा ये करती क्या है 2-2 घंटे पानी भरते के नाम पे जाती है नदी पे। तो पति को भेजा, जाके देख वो क्या करती है, किसी से मिल रही है या क्या कर रही है। तो वो जाता है और देखता है कि ये तो 1 घंटे से बस यही कर रही है, कभी उड़ेलती है पानी, फिर मटका भरेगी, फिर उसे उड़ेल देगी, फिर भरेगी। तो जब वो मटका भर के फाइनली घर आई शाम को, तो पति दरवाजे के बाहर खड़ा था और उसने ज़ोर से लाठी से मटका तोड़ दिया, सर पे मारा। कहानी ये है कि मटका तो टूटा, पानी सर पे बना रहा। So the pot broke, but the water remained on her head. And with that water, she filled all the utensils in the house. उसने सारे घर में बर्तन में पानी भरा, उस पानी से जो उसके सर पे बैठा हुआ था। और उसके बाद जो बचा हुआ पानी था उसने घर के बाहर फेंक दिया। कहते हैं वहाँ वो फैल के एक तालाब बन गया घर के बाहर। और तब उन्होंने अपने कपड़े वपड़े सब उतारे और उन्होंने कहा अब पानी आपके पास आ गया, अब मैं जा रही हूँ। एंड शी लेफ्ट। सो देर इज that's because she realized the calling is inside. And so I'll keep giving you a bit of her story through the works. So she leaves home at the age of 17, stark naked, पूरी तरह से नग्न। कपड़े जब वो घर में घुसती हैं तो प्ले में एक जगह है जहाँ पे मैं उनका एक वाक गाती हूँ। और क्योंकि ये थिएटर है और आप पोइट्री को किस तरह से थिएटर में लाएंगे, एक विजुअली उसे कैसे करेंगे, तो उनका एक जो है खोजन निकली
कब ये दिन बीता, कब ये रात ढली, So my song composer had composed it like this, which is very beautiful. I told her I want the sense of mountain air. But when I sing it as an actress, then I make it a little architectural. I go, if those of जो लोग पहाड़ों में जाते हैं, आपको दिखता है यहाँ पे भी hills हैं, तो पहाड़ों में दिखता है ना कि कोई जा रहा है, फिर वहाँ दिखता है, फिर अचानक वो गायब हो जाता है, फिर suddenly वहाँ दिखता है. You know, when you're walking in the mountains or you see somebody climbing mountains or against a mountainscape, you will suddenly see them here. Then for a moment they've disappeared. Then you'll suddenly see them there. So in the play I sing the song like this. खोजन निकली सुध न रही कब ये दिन The sun goes down. कब ये रात ढली, मिले अंत में घट में ही. I finally found him within. मेरे कंठ छली, the beloved I was looking for, and that was the moment. मेरे उनके नेह मिलन की, that was the moment that it all happened. So then she leaves her home, but leaving home is not easy. And I feel that one of the vaks that she must have said when she finally took the decision to leave, step out of the marriage home, must have been this one. हाथ मेरे थक गए हैं दूसरों के घर बनाते बनाते, हे शरीर कब उठाएंगे तुझे अपने घर से, बाद में आएंगे हजारों हाथ हिलाते हुए, रखेंगे तुझे खेत में पलट कर दाईं तरफ. My hands are tired of building other people's homes. Oh body, when will they take you out to your home? Later on, people will come waving their hands, lay you to rest in the field on your right side. And the one of her most famous sayings is, कहा गुरु ने मेरे मुझको बाहर से तू भीतर जा. My guru gave me but one percept, from without go within. छू गई मुझको बात गुरु की, बाहर से भीतर जा, छोड़ आवरण सारे, मैं नाची निर्वसना. That's when I decided to release every bondage, including my clothes, because that's just merely a covering for the soul. The body is already covering the soul. What do I need clothes for? You know? That's when she must have uttered this. This is what I do in the play. And it's very interesting that while we travel the whole world, this little space, which is supposed to take us all the way, they say there's the soul is in here. It's about the size of the half moon of your nail. It's the one journey we find it very hard to take. We can travel to Norway, see the northern lights. We can travel all over the world, but we don't manage to travel this much. So Lalden is someone who has managed to travel in there, found Shiva and Shakti. Now I would like to take you through a little process of when she's in the forest meditating, and this is Kashmir, snow, no clothes. I'd like you to close your eyes and imagine, I'll say a series of vaks. I imagine that at some point of time she must have fell down exhausted with her meditation, with trying to seek that deep inner connect. And therefore there's a series of vak which happen in the third act of the play. So I'd like you to close your eyes and listen to and imagine the forest, and also you will know, there'll be a silence, you'll also know when she's fallen on the ground and almost dead, and when she revives, and I'll tell you when to open your eyes. All right? So should you do that? So I'll give you her vaks. They'll be in Hindi, English, and Kashmiri, 3 of them. Okay, we'll start.
By mastering the vital breaths, I cut through the 6 forests till the moon woke up in me, digit by digit, and the world dried up in me. With love's fire, I parched my heart as one parches gold, and in that moment reached Shiva. Chalun chui was malta thrat, chalun chui mandinyan gatkar, chalun chui pan panun kadum grata, hatmali santush vaiti pana. Shiva, केशव जिना या वो जो कमल जन्मा, नाम उसका हो जो भी करे वो बस इतना, मुक्त करे मुझे इस रोग शरीर संसार से, नाम उसका हो जो भी सुबह 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 मैं लल्ला। पूर्ण थकित गिरती पड़ती खोजती मैं उसको अनगिनत प्रयासों से बंद दरवाजे के ताले तक। तब मैं थी, मेरा प्रेम था, फिर देखा उसको। Oh Shiva of the dark blue throat, you have your 6 powers and I have my 6, and yet estranged I have fallen into grief. For though between you and me there is no difference, yet there is one. You are the Lord of the 6, and I by the 6 am led astray. इस अंत में ना वो रहा ना मैं रही, मन हुआ बेमन, अज्ञानी अंधा जाने कब सत्य, निर्मल मन ही जाने परम को। पथ से गई पथ से कहीं बीच में दिवस खोया, कहीं बीच में दिवस खोया। जय बटटोली जब मैंने पाया कौड़ी भी न थी वहाँ, नदियाँ पार करने को अब कहो तरावा दूं तो क्या। It's after this that she possibly must have emerged and said, I didn't put my hope in it even for a moment. I didn't trust it even by a hair. Still I, Lalla, drank the wine of my own sayings, yet I seized that inner dark, brought it down, tore it
and cut it to pieces. I burned my filth in myself. I slew my heart, and then lalla, my name spread abroad, even as I sat just there with bended knees. You can open your eyes. And that's when she declares also, मैंने पूरी घाटी को हरमुख से कौसर नाग तक, the entire valley of Kashmir from Harmukh to Kausar Nag, I have seen it as a vast body of water. एक विशाल झील के रूप में देखा है. जिस दिन कश्मीर को हानि पहुंचेगी, the day Kashmiriyat is under threat and begins to be destroyed, the lakes will begin to dry. ये झील सूख जाएंगी. Interestingly, Lalla, when I first did her, I also discovered in the Times of India, there was an article about a French woman who had translated Lal Ded into French. I was fascinated. I just took the first bus and went to Pune after getting her address from the Times of India people. And I asked her, she was an old lady, she looked like a Maharashtrian. And she said to me, I said, so how did you find Lal Ded? She was very old. She says, I was 17 years old when the Second World War broke out. I was in France. In the bombings that happened, my entire family was wiped out. And so was my fiancé. वो 17 साल की थी जब वर्ल्ड वॉर 2 में पेरिस में रहती थी, फ्रांस में. तो जो बॉम्बिंग्स हुई उसमें उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया और उनका जो मंगेतर था वो भी मर गया, तो कोई बचा नहीं था. तो उन्होंने एक बोट पे चढ़ गई और सीधा इंडिया आ गई और बनारस में चली गई कहीं. शी फाउंड अ वे टू बनारस एंड देयर शी फाउंड लल वाक्स somehow. And she says, they gave me so much strength to think about living my life. So she wanted me to do the play Lal Ded at the Orleans Français. So she took me to the French consulate. And he was a wonderful man. He was also a poet. तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन फ्रांस का कुछ होना चाहिए तभी हम स्पॉन्सर कर पाएंगे. तो मैंने कहा भाई फ्रांस का तो ये लाई है, मुझे तो इतना फ्रेंच है पर बाकी तो कुछ नहीं है. तो कहते हैं क्या आप एक पोइट्री उसकी फ्रेंच में बोल सकते हैं? मैंने कहा बताइए, बोल देते हैं. सो दैट इज़ द सेम वन, लल बुचायस बागे बरस. So my French is not very great. My brother who speaks great French doesn't think I'm speaking French at all. But this is how he taught it to me. Moi, là, je suis entrée dans le jardin de mon esprit. J'ai vu une shiva et charté. Je me suis immergée dans la bonne et mort. Je suis plus vivante, coupe donc me faire le monde. I use this work even today as an homage to Nishtatai and to this poet. And because I think Lal Ded just belongs to everyone. So then Lal Ded is someone who comes back into the people's lives and remains there for 50 years as the wandering naked mystic. माने वो नग्न मिस्टिक औरत, वो 50 साल तक, 80 साल की उम्र तक वो कश्मीरियों के बीच में रहीं और कश्मीरियों माने उनके जो वाक थे वो मुझे लगता है वो वाक ही बोलती होंगी, वो शायद कुछ बात करती भी नहीं होंगी. जहाँ जाती होंगी कुछ बोलता होगा कोई तो बोलती होंगी कुस्मारी तक कसमारन या ऐसा कुछ, you know, या बेवकूफ़ है उसको क्यों तुम माने उसकी खाल क्यों खचोड़ रही हो, you know. And then there are beautiful works of hers which are about the internal process. So she will say something like, the mind is new, the moon is new, the vast expanse of water is new, I, Lalla, am a new phenomena. The mind is new, the moon, the supramental moon. Now, in this work that you just heard, by mastering the vital breaths, I cut through the 6 forests. So what are the 6 forests? The 6 chakras. So she also gives you yogic indications of how to practice the yogic thing. And there's again, so Tsat Novai, Chandram Novai, Jalme, Dutum Novai, Novai, Yan Pyat Lalime, Tan Man Novai, Tan Lalb Novai, Novai Chas. चांद नया, चित्त नया, जल विस्तार आकार नया, मैं लल्ला भी नई नई. And is it time already? I think
I will leave you with one of her works, which is to do with her comparing her life to the cotton flower, to weaving, to the cloth, and things like that. So that's a work. There are many great stories about Lalla actually. एक तो मैं सुनाई देती हूँ, बहुत अच्छी story है वो. एक वो नग्न घूमती थी. तो कई बारी बच्चे होते. See, there were two things that would happen. Either people would say नमस्कार or they would insult. तो बच्चे पत्थर फेंकते हुए पीछे पीछे जा रहे थे उनके. तो एक कपड़ा बेचने वाला था. उन दिनों कपड़ा बेचने वाले तौल के कपड़ा लेते थे ना, तौलते थे कपड़ा. तो एक कहानी जो प्ले में है वो कहता है कि मैंने लल्ला को एक कपड़ा दिया और कहा तुम इससे अपने शरीर को ढक लो. Cover yourself with this cloth. They are stoning you and all that. So Laldet apparently tore the cloth in exactly 2 pieces. उसने बीचों बीच फाड़ के उसके 2 टुकड़े कर दिए. एक टुकड़ा दाएं कंधे पर रखा, दूसरा बाएं कंधे पर, और चल दी. तो एक one cloth was on the left shoulder, one on the right shoulder. जो सम्मान देता उसे, तो दाएं कपड़े में रखे या किसी भी एक में वो गांठ बांध देती कि सम्मान मिला, ये गांठ बांध दी. दूसरा सम्मान तो इसी कपड़े में गांठ बांध दी. और जो कोई अगर बदतमीजी से व्यवहार करता तो दूसरे कपड़े में वो गांठ बांधना शुरू कर देती. तो कहता ये संध्या समय वो मेरे पास आई, गांठ भरे 2 टुकड़े मेरे सामने रखे और कहा इन्हें जरा तौलो. She brought both the pieces of cloth with many knots on each one. Some had probably more, some had less, and said, weigh them. इन्हें तौलो, देखें किसका भार अधिक है. माने कौन सा ज़्यादा भारी है, देखें. तो कहता है मैंने तौला. I weighed them. दोनों पलड़ों का भार बराबर था. They weighed exactly the same. Then she says, पूजे पुष्प से या पत्थर मारे, नवाए शीश या दुत्कारे, जो मन उनके चाहे कहें करे, चिंता नहीं, राख से कांच मैला नहीं होता, चमक उसकी और बढ़ती है. So for the friends in English it is, whether they worship me with flowers or throw stones at me, it doesn't matter. When the inside is completely connected, all this has no meaning, because when you throw ash on a mirror, in order to sully it, it actually polishes the mirror even brighter. So what does it mean? And interestingly, I was once performing in Haryana at the Surajkund Mela. And there was a bunch of guys, of some people up there who started hooting 5 minutes into the performance. Oh, yeah, oh, yeah. So I'm here doing this very quiet, esoteric play. And I was getting distracted. And what I could have done was simply ask the cops and said, throw those guys out. And this was an open-air auditorium, so there were 1,000 people sitting there. My instinct was to say, throw these guys out. And then I looked and I saw this cop, this woman cop, lady cop. She was watching like this, the play. And the women were like this, watching, and so were the men. They were not even listening to those guys hooting. So I continued with the play. And they kept hooting. And when I came to this वाक, पूजे पुष्प से हम पत्थर मारे, I said, "Hey, सुनो, तुम्हारे लिए है ये वाक, एक बार सुन लो, अच्छे से." And it was an incredible moment for me because this was the first time I was actually experiencing the वाक. पूजे पुष्प से या पत्थर मारे, how does it matter? So the 2 things about Laldet which are great is that she is not reactive. So what I learned from her is, निकल जाओ, अपना समाज अपने अंदर हो ना, निकल जाओ. कोई गाली मक रहा है, रिएक्टिव हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, निकल जाओ. She creates a space in the world and in every individual which is a space of great nurture of the self, the higher self. And that is why sometimes when there's a lot of noise going on about this and that happening in many places, it's like you have to create a counter energy. You don't have to get involved in every fight. If you create a strong enough energy which is about affirmation, which is about keeping the space alive of the self, of the higher consciousness, you're already creating a space. So years ago when I was researching the film, I went to Dr. Karan Singh because with great naivete I managed to get an interview with him, and he said,
ये जो तुम बोल रही हो ललित के बारे में, this is all nonsense now. This doesn't exist. The idea that Kashmiris are, she's the iconic person for them, that within her they have, their soul is still alive. It doesn't exist. So I told him, I said, Dr. Karan Singh, that might be the political reality, but my job as an artist is to keep that space alive. To keep that space there, that there is a space like this, and it was, and it is, and it's still within people, which is why Lalit is alive after 700 years. So I'll finish this evening with another work of hers. I bloomed, I was born happy and full of joy and hope like a cotton flower. And then they plucked me and spun me and made me into a yarn. And then that yarn was woven into cloth, and the cloth was scrubbed and trashed and washed and cleaned and with fuller's earth. Mane. And then it was cut very carefully, and that is how I became Lalla. So, मैं कपास के फूल सी खिली, उमंग और उम्मीद से भरी. I'll do the action I do when I'm at the last bit of the play. तभी आए बेलने पर रगड़ने धुनकने वाले पिंजारे, धुनका मुझे, पीटा मुझे, फिर एक स्त्री ने चरखे पर काता मुझे. महीन सूत मैं बनी, बेसहारा टांग दी गई, जुलाहे के करघे पर प्रहार किए, जुलाहे ने अपनी बुहारी से मुझ पर. मैं कपड़े में बदल गई. Then the washerman dashed me on the washing stone and scrubbed me hard with fuller's earth. फिर दर्जी आया, कैंची उसने चलाई मुझ पर, और बहुत एहतियात से किए टुकड़े मेरे, किए टुकड़े मेरे. इस तरह हुआ सब कुछ, इस तरह पहुंची मैं लल्लेश्वरी, पहुंची उसके करीब. I think I've gone over time, but thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. I'm grateful, and thanks, Lalla. More power to Udaipur Tales. Thank you.